education MES-15. In that contest, we try to cover first 3 units. Those we have successfully completed. We have discussed about different concepts regarding operational dimensions in education, where we found and explored meaning of education and different channels of education, educational implementation, educational organizations, agencies, different components. Those things we have discussed in the last class. Let us move to the other units that is residing in this block 1. Let us discuss about 2 more units, Unit 4 and Unit 5. Unit 4 is related to education for all in India, joint responsibility of state and community. And the last unit of this block 1, educational operation at macro level, different situations, that is about informal education. So these 2 units we will try to cover in this class. Also, we will try to move to block 2, where we will try to complete another unit. So let me find out some concepts related to this education for all in India, joint responsibility of state and community. So in the last class, we also explored that different types of agencies, different types of levels, channels related to our educational implementation. So in this concern, we have to also understand regarding who is responsible for education in throughout the India. So first is state, and as well as we have to also discuss about role of community for implementing educational practices at the grassroots level. So those things we will discuss. So in this particular unit, you will find education, first unit 4, that is about education for all in India, joint responsibility of state and community. So how this, what are the different rules, those are governing. Ke patti korcho? Jyotishree, please mute your mic. So education for all in India. In this concern, let us find out what are those rules, constitutional provisions, those are controlling our educational practices at state level, community level, or central level. Those things we will discuss in this unit. So first thing is about constitution and legal basis. And in that concern, we will also try to understand what are those rules, regulations, those are governing our educational practices. In addition to that, some other concepts we will also discuss, some types of policies and programs, those are also going on in our country. Those things we will also try to understand, like recent worldwide development of education for all, and what is the response of India with respect to this education for all. Those things also we will discuss. And in addition to that, some other provisions that is regarding early child care and childhood care and education, universalization of elementary education, Sarva Shiksha Abhiyan, literacy and life skill programs for adults. Those things also we will try to cover. So let me move to its objectives, different objectives related to this particular block. So before these are all concepts that is within your block 4 unit 4 in your block 1 unit 4. That is, after going through this particular unit, you will also try to understand role of community, education for all, universalization of elementary education, like that. So first move to this constitutional legal basis. Those are controlling our educational practices in our country. So what are those provisions? Let us again revise it. What are those constitutional provisions? Those are governing education or controlling educational practices in our country. Ki kahibo? Ma'am, Article 21A, right to free and compulsory education for the child between 6 to 14 years.
आर्टिकल 21A कौन से रही? Ma'am, it is the fundamental right of every children between the age of 6 to 14 that they must have education, means primary education up to the class 8. Hmm. Each and every child, they have to take education from pre-primary level, primary level, they have to move. This is the main concept of this article 21. How kona? Anything else? How kona education related kona constitutional provisions achi? Madam, Article Article 21 40. amended 86. Hmm. अच्छा. So constitution ଆଉ legal basis ର ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା already ତୁମେ କହୁଛ article 45 ଯୋଉଟା ଆମେ last class ରେ ବି discussion କରିଥିଲୁ, free and compulsory education to all children up to age 14. ହଁ, and ସେଇ time ରେ just ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା article 45. ତାପରେ ମଧ୍ୟ education ଯୋଉଟା ଆମର education ରହିଛି ଯୋଉଟା concurrent list ରେ ରହିଛି, that is the responsibility of both state level and central level agencies. So ଆଗରୁ ଏଟା just ମାନେ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ concurrent list ରେ ନଥିଲା, but concurrent list ରେ ଏଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର both central level and government, ଆମର central government ଆଉ state government both are responsible for the upliftment of this education. And article 45 तापर आसले जोटा कहाला कि 6 to 14 years compulsory free education हमको दबाको अच्छी पिलांगो जोटा तापर आसला 21A जोटा तमे कहूछ 86 amendment and constitutional amendment act 2002 जोटा रहिला added a new article 21A to direct the state to provide free and compulsory education to all children up to age of 6 to 14 years. हाँ ता सहित मध्य जोटा वर्तमान राइट टू एजुकेशन जो मैं कहि परिबा राइट टू एजुकेशन 2009 रे हम सब एस विषय डिस्कशन करथिले लास्ट. हां सिगुडा सब ही एई पर्टिकुलर यूनिट रे पुनी थर रही छी. हां न्यू फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए के जोटा सब टिके मने रखिबो. अच्छा. Again in this unit also जोटा कि द डकार कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन फोरम से विषय भी किछि देइछि. कोन एटा डकार कॉन्फ्रेंस कोन कि कहि परिबो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम कोन आउ यार रिलेशन कोन वर्तमान जो एनईपी 2020 आइछि ता से तो कोन रिलेशन रहि छि कि कोन कहि परिबो को त जानि छ तम माने. So जोटा 2002 रे गोटे आसीथिला हमर कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जोटा रही छी सेइथरे कोहा गला कोन सब तार गोटे सब देशरु आसी कि ना समस्ते गोटे एजुकेशन से माने सब एटार गोटे मीटिंग करथिले जोथरे कि सेमानकर डकार रो गोल्स रहिछला से जगहटा से डकार रही छी सेठी तो कोन सब तार मेन गोल्स उडा कर रहिथिला जेंति कि तमे देखि परछो इथरे स्लाइड रे भी expanding and improving comprehensive early childhood care and education. So ECC upre emphasis diaithila ta sete ensuring that by 2015 all children particularly girls children in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities have access to and complete free and compulsory education. So gender disparity is no ho education neba pai seithre madhya semane importance deithile jota tam bahire bi achi ensuring that learning needs of all young people and adults are met through equitable access. So equitable access, equitable retention and equality in education with respect to gender, caste, locality ए सब को ने कि इक्वालिटी हम मेंटेन करबा केमती ता ऊपर एम्फासिस मेनली दिया जाइतला सही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रे. And eliminating gender disparities boys and girls. What do you mean by gender disparities? Can anybody tell me what do you mean by gender disparities? Ki kohibo? Ma'am, it is kind of the discrimination not between the sex but between the gender of means male and female. Means for example, a woman is expected or a female child is expected to play with toys and not
can and can say she can cry, but a male child is expected not to cry and this kind of not to play with the toys. So here in the gender disparities means to a particular gender we are favoring. Rasmita Behra, please mute your mic. Where you are going? Huh? Boss रे जाउछ. The gender disparities ଆମେ କହିପାରିବା. So where we are favoring particular gender, whether boy or Ma'am, girl. Hmm. ma'am, we can say gender stereotypes, the society, the expectation of the society from one type of gender. Hmm. Expectation. So ଗୋଟେ particular gender ରୁ କିଛି ଆମେ ବିଶେଷ expectation ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ସେମିତି ରଖିନଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ gender disparity ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଗୋଟେ ଯେଥିରେ ଆମେ partiality କରୁଛେ. So whenever we are going through the data, educational data, we are finding that mostly a particular gender is getting more favor with respect to what getting education or like that from the society, whereas another gender is not getting that favor. So that means ଗୋଟେ particular gender को ଆମେ promote କରୁଛେ ତମେ education ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ particular gender girls ମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ସେଇ ଡାଟା ରୁ ଦେଖାଲା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହୁଛି educational participation ରେ. So that means here they are thinking that we have to also make some type of strategy so that we can mainstream our girls, women Good to evening, ma'am. Pranam. into this educational field, so that so that we can maintain equality in our education, in the field of education, in providing education. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁତକ ଦେଖିବ ଯେତିକି ବି କମିଟି କମିଶନ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିଛି, mainly they are giving emphasis on what bridging this gap of gender disparities. ଯୋଉଟା ବି ତମେ ଦେଖ Good evening, whether ma'am. okay, then providing improving every aspect of equality of education and ensuring excellence so that recognized measurable learning outcomes are achieved. So first thing is that equality and to equality and access, this is very important. So providing education in a very equal manner and accessibility to all kinds of learners, it is very important, and quality maintenance, that is also given in many conferences, many educational conferences, they have emphasized it. So এটা তো ହେଇଗଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ educational world educational forum ରେ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, but what is the response of education India with respect to educational development? So after that some types of development we are realizing with respect to educational field, ଯେମିତି କି separate department of elementary education literacy, it was created in the year 1999, and constitutional amendment जोटा कि रहिला फंडामेंटल राइट पे से टाइम रो ही 99 परे ही सेटा एम्फासिस दिया गला 2009 रे जाय कि सेटा उडा हला एजुकेशनल राइट रो समस्त कर रहइबो. एंड ईएफएस स्ट्रेटजीज एटा भी गोटे रहिला इंपोर्टेंट जिंस. व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फॉर ऑल? implementation of EFA means education for all. So they are in India, they are giving more emphasis on education for all, equal access to all people. Each and every person, they are having equal right to get education. So जोटा कि हमरो देखिलो विभिन्न प्रकार प्रोग्राम्स गुडा आसी गला सर्व शिक्षा अभियान एंड नेशनल लिटरेसी मिशन. So they have launched this type of program to our people. Okay, ଯେମିତି କି ରହିଲା सर्व शिक्षा अभियान ଆଉ नेशनल लिटरेसी मिशन, ये ଶୁଣିଥିବ ସବୁ. So सर्व शिक्षा अभियान जोटा ରହିଲା एलिमेंटरी लेवल ले सेटा मध्ये रहिछि, and the second strategy is to actively involve the people at the grassroots level and through this democratic devolution of power. So केमती एटा रियलाइज होछि? What do you mean by this devolution of power? मैम स्टेट ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ କଣ?
Ma'am, actually, devolution of power means the power is not centralized, means it has been decentralized. Means state governments, there is central government, there is local self-government, like Panchayat Samiti. This is called devolution, means not getting centralized, but being distributed. Distributed. So nowadays also you are observing in school level devolution of power. In which aspect? Kemti hochi devolution of power. Any example you can give? Any example? At the grassroots level, how are we realizing this revolution of power? Can you give me any example? टीचर मानकर जो सैलरी दिया जाए प्राइमरी टीचर मानकर तो सेटा सेंट्रल आउ स्टेट गवर्नमेंट मिसिकी दियंती एई टाइप रो गोटे दी जण मिसिकी ना डिवोल्यूशन ऑफ पावर माने जेतिकी तुम पाखरे अछि पावर अछि स्कूल रो हला स्कूल एतले काम कर जो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की प्रिंसिपल में हेड एचएम रहउछन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस तो तांकर जेतिकी पावर केवल अछि ना आउ किछि प्रकार रो पावर सेतरे इन्वॉल्व होची सेटा मु पचारछि केमती रिवोल्यूशन जेमती रहइबा जणक पाखे कन्संट्रेट न हेकरी आउ समस्त मते सेतरे इन्वॉल्व होउछन कि गोटे डिसीजन नबा मैम एसएमसी एसएमडीसी एगुड़ा हमको मिलले सब रही जहाँ थ्रो रे एटा ही पारुची मैम किछि मैनेजमेंट कमिटी रहउची yes yes that is the devolution of power but earlier just back 10 20 to 20 years back or like 15 years back sometime only HM was the head of the institution and as per his or her decision this institution was working with respect to taking different type of decisions or implementing different activities he was or she was only responsible से ही केवल नौथिले डिसीजन नवर कोनसी फाइनेंशियल डिसीजन हो किछि काम हो किछि so at that time that power was centralized we can see but nowadays what we are giving more emphasis to community people community members different members of different committees those are working within the school जो माने अछंती committee members तांको मध्य किछि कोन suggestions निया जाउछि that is the devolution of power 76 75 जो तमर गोटे constitutional provision आसिला सेथरे चेंज हे कि ना सेटा चेंज हे कि जे नै समस्त सेथरे मिसिबे grassroots level okay so different problems were also sensitized and it was considered that only through education we can solve these different types of problem like poverty deprivation unemployment and for that they are giving utmost importance to education and they so different policies were also framed social mobilization and eradication of adult illiteracy are attempted greater coverage of media right to information act ICT involvement so these are the reaction what this world education committee or conference they have suggested to India. India has started implementing different types of activities, different type of policies, different type of schemes have been launched, and different constitutional provision like Right to Information Act, inclusion of technology in education or social mobilization, adult education, education for all. एगुड़ाक सबू तापरे start हला. So different EFA goals are set by India जोटा कि मु कहूली जो केमती आमे एजुकेशन को बेसी भल से आमे समस्त को पाखो पहुंचै परिबा ए विषय रे सेंट्रल लेवल ले स्टेट लेवल ले बहुत डिस्कशन हला and they have set some goals so that we can achieve education for all. So the ICDS integrated child development service scheme for early childhood student जो मन रहला इंटीग्रेटेड आईसीडीएस जोटा रहिछि सुनिथियो सम्माने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम it is being universalized for early childhood student जोटा कैमे ईसीसी ई मध्ये कहउछि early childhood care and education ପାଇଁ सर्व शिक्षा अभियान त जानिछ and
So different 5-year plans are there. There also they have started including education as a very important part, and a national literacy mission achieve sustainable threshold level of 75% literacy by 2007. So they have started setting their goals. Okay, and they have targeted girls, adolescent girls, and try to make this education universalized. Removal of all disparities, including gender, primary class by 2007 and by 2010. जोटा कि से सेट कले केमिति आमे समस्त को पाई एजुकेशन आमे आनी परिबा, education for all, and by that also they have started preparing their goals. So first one is your ECCE. So ECCE कौन कि कहबो प्रथमे को Early childhood care and education. Early child care and education. Ma'am, early childhood care and education, it starts from birth to 8 years old. So it's a childhood. Early childhood care efforts means period between birth and 8 years life, and for their education they have started this scheme. So early childhood care education ro kon sabu roichi objectives. So they have started making first objective, that is school readiness. Sanku ready kariya school pai, play exploration, diversity and inclusion, engagement of parents and the community in the school activities, health and well-being, that means physical well-being. And also it is trying to make this ECCE program universal, that is another goals we can say, universal access. Samaste asibe ECCE ba early childhood care involve hebe, multifaceted learning, preparatory class, fundamental learning, community. ए गुडा तो सब रहिला. आ गोटे भी तमे देखि परिबो एनईपी 2020 कोन कहै छी. एटा गोटे डाउट थिला मैडम. हाँ. एनईपी 2020 अनुसार जोटा हमर 5+3+3+4 पैटर्न हेची, तो फास्ट 5 वर्ष पय गोटे कोर्स से कहै छी करिया पय, से कोर्स रो नेम टा कोन? सेमती किछ नै, जमती आमे कहउतले लास्ट क्लास रे आमे पढुतले नर्सरी बा जोटा फर्स्ट फेज रहउची किंडरगार्टन, से गुडा को सेमती रही छी. आ ओइटा पूरा डीएलएडी कोर्स रहची प्राइमरी पय, हमर जेम डीएलएडी कोर्स थिला सेमती किछ गोटे से कोर्स कोडे आनिया को जाउची. सेटा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग रे ही रही छी. तार टीचर ट्रेनिंग केवल तमे देखियो गोटे गोटे यूनिवर्सिटी से माने करूछंती, जदी ओयूट रे गोटे थिला हम सुनिची, आउ किछिरा जगह रे सेमती रही छी, किंतु तार किछ स्पेशल सेमती किछ बीएड बाय डीएलएडी पय सेमती किछ नाही. तार विभिन्न यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट तो नो यूनिवर्सिटीज गुडा को सेडा दोउछंती नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहिना तम करछंती, एवं सेटा हम ट्रेन टीचर हबा कथा. बट तार आ गोटे भी रही छी तमर इग्नोर रे भी गोटे प्रोग्राम सेमती अर्ली चाइल्डहुड केयर भी सब रहुची. सेटा जदी जड़े पास करची ताहाले से माने मध्य टीचरशिप पय अप्लाई करि परिबे नर्सरी टीचर रे. तो सेटा बहुत माने स्किलफुली से मन को मध्य ट्रेनिंग दिया जाय केमिति तमे नर्सरी लेवल पिला को पढे परिबो. मैडम थैंक यू. सेटा इग्नोर रे अछि बा किछरा तमे दे सर्च करिवो वेबसाइट रे तमे पाई परिबो अर्ली चाइल्डहुड केयर रो किछि कोर्स. किंबा आउ मध्ये गवर्नमेंट तरफ रु मध्ये ट्रेनिंग दिया जाय था विभिन्न कम्युनिटी रे से विषय रे, जो माने कि ए भले बाल बाटिका रे काम करि परिबे बा सेठी से मान को मध्ये कम्युनिटी रु नै किना सन किछि 6 मास पई बा 3 मास पई से ट्रेनिंग दे किना ताको मध्ये एम्प्लॉयमेंट रे रखा जाय था, बट सर्टिफिकेट से माने देई थांती. मैम जो अंगनवाड़ी टीचर पय जोटा दिया होची सेटा गोटे हबो एग्जांपल. से भले हबो. तो वर्तमान आमे देखिया कोन एनईपी 2020 कहिची हमरा अर्ली चाइल्ड ECCE पय. So it has given many points related to early childhood care education, जेमति कि holistic development, multilingualism, curricular integration, टीचर्स मान ट्रेनिंग को इंपोर्टेंस दिया जाय छी, ताको ऑनलाइन ऑफलाइन रे ट्रेनिंग दिया जाओ बोली से ट्रे सजेशन दिया जाय छी. रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट से मान को भी रिक्रूटमेंट हो,
सेटा मध्ये कहला सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर केमती सर्विस ताको से माने क्रिएट करबे गोटे एनवायरनमेंट केमती क्रिएट करा जिवो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जेमती आमे कहि पर समस्त इक्वाली ट्रीट करबा आ इंक्लूसिव जदी किछि अछंती पिला ताको मध्ये इंक्लूड करबा एवं सेमान को मध्ये एजुकेशन देबा एफिशिएंट रिसोर्सिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ए विषय मध्य से गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट इथरे दिया जायछि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो इथरे मध्य इंपोर्टेंस दिया जायछि एनईपी 20 रे तांकर पिलांकर प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल मध्ये ड्रॉप आउट रेट को आमे चेक करबा रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी ए सब विषय रे एनईपी 2020 रे स्कूल एजुकेशन रे दियाइछे एवं गोटे इंपोर्टेंट पार्ट मध्ये रहिछि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन रे एटा टिके तमे तथापि जदियो तम बही रे नाही तमे आइडिया टिके रखिथिबो कारण ए बही रे मु जहा देखुतली इग्नोर जी जो भी बही रे बहुत जिंस एबे बहुत पुराना कथा लिखाइछि जदियो सेटा एग्जाम रे पढिबो किंतु ए वर्तमान तमरा एनईपी 2020 जेतु आसी गलाणी विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तमे दउथबो एनईपी 2020 ऊपर तमरा टिके आइडिया रहितबा कथा सो दैट सेटा तमे जानि परिबो बहुत जिंस केवल एबे ए जे प्राय तो मु देखुची बुक रे सर्वशिक्षा अभियान एगुडा को ऊपर इंपोर्टेंस दिया जायछि सेही भलिया जोटा कि 2000 जोटा 10 9 एही भलिया देइछि किंतु तथापि जेतु तमे मे करूछो ए एनईपी 2020 ऊपर टिके इंपोर्टेंस तमे दबो मैम गोटे डाउट हां हां मैम जदि सपोज आम बुक रे ना आपण जेमि कहले रिवाइज हेनी जेमि स्कूल सिस्टम से पुराना सिस्टम ही अछि 10 हां प्लस 2 प्लस 3 जदि हां एग्जाम रे क्वेश्चन आछि कि स्कूल सिस्टम विषय किछि डिस्क्राइब करियो हम नुवा आंसर लिखियो पड़िबो ना जोटा मटेरियल ले अछि मु कहछि तमे नुवा विषय रे मते तमे पढि था मटेरियल जदियो नाही बट नेट रे तमे पाइ जिवो जस्ट लेखिना देले किछटा पढि थाओ कारण से माने तो जदि क्वेश्चन पचारिबे निश्चित भाबे तांको अनुसार एमिति क्वेश्चन मु भाबुची बनेबे जोटा कि तांकर मटेरियल रे जेमति किछि डेविएशन न आसीबो आ जदि भी करू छथि तुमको निश्चित भाबे जेतु आमे 2024 को पळे आसिलुनी आ 4 वर्ष हे 3 वर्ष हे गलानी प्राय तो एनईपी 2020 को आसिया को तेणु स्कूल एजुकेशन जोटा मु देखेली एई पार्ट टा टिके तमरा पढिथिबो स्कूल आ ए लेवल टा एटा बेसी इंपोर्टेंट जोटा रहउची स्कूल एजुकेशन ऊपर एटा टिके तमे पढिथिले भलो हो सो दैट तमे टिके आउट एक्स्ट्रा मध्ये लेखि परिबो एग्जाम रे आज्ञा बुझि पालो एगुडा तो रहिछि आईसीडीएस एगुडा को रहिछि किंतु किछटा मु देखुछि बहुत गुडे पुराना जिंस तम बही रे देइछि आ जेठु एटा गुटे तमरो काउंसलिंग क्लास एटा मध्ये निश्चित भाव में तुम माने ताकू गुरुतर भाव नेब जे तुम एनईपी 2020 रो टिके बही पढिबो कारण एटा जदियो तुम एमए पळे आछे तुमे लिखि देई परिबो आ टिके अधिका करिकरी एग्जाम रे तुमे लिखि देई परिबो टिके आइडिया थिले जे बहुत पुराना कथा सब देइछि बुझिला आ उडे तुम रहिछि आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम जोटा कि चाइल्ड मानकर चिल्ड्रन मानकर सब डेवलपमेंट पाई होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई रहिछि 0 to 6 years and for the pregnant lactating mothers from disadvantaged section ताको मानको पाई किछि काम हमें करि परिबा through this integrated child development service this scheme has provided package of supplementary nutrition immunization health checkup referral service preschool non formal education and health and nutrition education एटा रहिछि आईसीडीएस रे त मेन उडे एजुकेशन पार्ट मध्ये रहिछि प्री स्कूल एजुकेशन प्लस नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थी केमती रहि परिबो फिजिकल एजुकेशन मेंटल एजुकेशन केमती भलो रहइबो चिल्ड्रन मान को वुमेन मान कर ता ऊपर मध्ये आईसीडीएस इंपोर्टेंस देइ
ବୋଧେ ମ୍ୟାମଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। नेटवर्क कनेक्शन टा हला बोधे रिकनेक्ट हो गला। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we were discussing about universalization of elementary education. In that respect, what do you mean by universalization of elementary education? Ma'am, elementary education for all. Yes, each and every student. Each and every children at the age group 6 to 14. 6 Rasmita, to 14 year. Madam, 6 to 14 year. Age, all children have the right to get education. It is their right. Ma'am, compulsory and free education for 6 to 14 years, irrespective of their caste, creed, and sex. yes. So what are the stages of universalization of elementary education? So mainly they are giving emphasis on universalization of provision, enrollment, retention, participation, and achievement. So universalization of universal access or provision. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିବ, that is the provision of education institution for all. So ତା ଉପରେ କାମ କରାଗଲା. Then universalization of enrollment, each and every student must enrolled. ସବୁ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ କଣ ହେଲା, ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ enrollment ହେବେ. And what do you mean by universalization of retention? मैडम रिटेंशन अर्थ किछि पिला माने खाली ना लिखाई दियंती हेले स्कूल आसंतीनी बा अधर स्कूल छाड़ी पळांती तो रिटेंशन अर्थ पाठ पढ़ा शेष हेबा पर्यंत से माने स्कूल रे रहिबे और शिक्षा ग्रहण करिवे. Yes. So universal retention, then universal participation. ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ participate କରିବେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଗୋଟେ. And universalization of achievement. What is that? Universal achievement. मैम अचीवमेंट अर्थ खाली तो ना लेखिकी रही गले स्कूल हबनी पिला ठीक से पाठ बुझुचंती कि नहीं शिखुचंती ना नहीं जो माने लक्ष्य रखिकी स्कूल पिलान को पढ़ा जाउची से लक्ष्य गुड़िक पिलान द्वारा अचीव हेउची कि नहीं से माने डेवलपमेंट होची कि नहीं से सबुर देखिया को हम कहबा यूनिवर्सल achievement. Achievement level केते अछि स्कूल ले सबुले सेटा ही पचार जैते केते परसेंट रखुचंदी माने जदी हमें देखिबा तांकर हाराहारी केते रखुचंदी मीन तांकर केते आछि प्राय त जदी सेटा रहिला तुमर मैक्सिमम पिला 60% तळको रखले मैक्सिमम पिला 30% 40% रखिले देन यू कैन से दैट अचीवमेंट लेवल बहुत कम अछि स्कूल टारगेट बहुत कम अचीव हेछि बा पिलांकर परफॉर्मेंस बहुत खराब अछि तो ताले किछि एजुकेशन रो वैल्यू नै ता माने कोन एजुकेशन रो किछि परिमाण रे फेलियर बेसी रहउछंती तो हमर एजुकेशन क्वालिटी मध्ये सेतरे डिटोरिएट हैला एई बळा कुआ जाई परिबो. सो यूनिवर्सल अचीवमेंट मीन्स सब पिलांक प्राय तो भल से माने पाठटा को बुझी परिबे भल से माने पढी परिबे एवं भल परफॉर्मेंस करि परिबे भल मार्क रखि परिबे भल स्कोरिंग तांकर आसुची ताले हमें कहि परिबा जे अचीवमेंट लेवल तांकर भल अछि. सो इक्वल अचीवमेंट प्राय तो बहुत कम देखा जाउथिला आगुरु बट ग्रेजुअली सेति पय काम करा गउची जे किनी केमिति पिला केवल यूनिवर्सली एनरोलमेंट बा रिटेंशन रे बा पार्टिसिपेशन न रेकी समस्त करा केमिति अचीवमेंट लेवल मध्ये बेसी हबो ता ऊपर मध्ये काम करा जाउची हैला. सोटा के हम लास्ट क्लास रे मध्ये पढिदिलु सेति पय किछिटा स्कीम्स बही रे मध्ये तमर देई जे एमती ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट जोटा मिड डे मील डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लोक जुम्बिस महिला समक्षे लास्ट क्लास रे मध्ये हम डिस्कशन करथिले.
सो इथरे बहुत गुडे तमरा बही रे मध्ये डाटा गुडा दे जाइछि केते एनरोलमेंट हेइतिले केते इंक्रीज हेइछि से विषय रे नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो कोन स्टेटस अछि पढिबो एजुकेशन गारंटी स्कीम अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन जोटा रही अल्टरनेटिव वे रे केमती आमे नॉन फॉर्मल एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन एगुडा को केमती आमे पढाई परिबा So growth of enrollment in elementary stage जोटा कि हमें विभिन्न प्रकार प्रोग्राम कले सर्वशिक्षा अभियान डीपीपी एटा सब हैला जोटा तुम बही रे मध्ये देछि 30 जोटा गोटे स्टेटस देछि 2004-5 रे केते थिला एवं सेटा धीरे धीरे बढ़ुची एबे मध्ये आहुरी बढ़ी गलानी 2023 को जदि तमे देखिबो जोटा कि आ गोटे मध्ये तमे देछि गर्ल्स एनरोलमेंट क्लास 1 to 5 आ 1 to 8 ए भितरे केते रहुची जोटा स्टैटिस्टिक्स 2004-5 रे बही रे मध्ये देछि देखिबो देखो 43.5 रहुची सब कम्युनिटी रे इटी 40.9 एससी एसटी रे 44 ए भले तार एनरोलमेंट लेवल रहिची गर्ल्स मनगर एटा गोटे जस्ट तमको पाई तम पाई गोटे खाली स्टैटिस्टिकल डाटा उडा को इथरे रहिची देखि परिबो कंपेयर करि परिबो केमती बढ़ी छी इथरे जेहेतु विभिन्न प्रकार रहिला सब प्रोग्राम गुडा कर होउची बा विभिन्न स्कीम्स गुडा का इंप्लीमेंटेशन होउची तो कोन तार डाटा रहिची केते परिमाण रे एडा को फ्रूटफुल हेई परछंती से सेटा मध्ये ग्रेजुअली बढ़ी छी हम देखि परिबो डाटा out of school elementary education in school and out of school children in India at elementary level केते रहउची कोन देखुछ इथरे को कोनटा तमे इथे इंटरप्रेट करूछ कि कहबो निश्चित भाव एते गोटे स्कीम आसिला परे सेंसस रे जेटा करा होची विभिन्न प्रकार सर्वे सेथरे हम देखिबा जे धीरे धीरे साक्षरता हार बढ़ुची एवं ता सहित मध्य पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज गर्ल्स देयर अचीवमेंट सेउडा को मध्य धीरे धीरे बढ़ुची सो सर्व शिक्षा अभियान जेटा हम कहबा लास्ट क्लास रे मध्य पढ़ितिले व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान के कहबो को या विषय जस्ट रिवाइज सब से जिन उडा कहीं आउ टिके टिके अधिका करी दिया हेची बही रे कोन सर्व शिक्षा अभियान को मैम सर्वशिक्षा अभियान 2000 रे आस्तला किंतु 2001 हेडा होची कि कार्यकारी हितला सेटर मैम मेन पार्ट है सभ्य पढ़ंतु सेटा Ma'am, it is a comprehensive and integrated flagship program of Government of India to attain universal elementary education, covering the entire country in a mission mode. Very good. Barsa, very good. Pratap. Very good. बहुत भल भाव रे तुम माने बुझीछ so provide useful quality education. Yes. So they have set some time limit to achieve their target. Goal wise, their targets have been written in this slide. You can see. So what are those goals of Sarva Shiksha Abhiyan? कौन देखुछ? All children in the 6 to 14 years. जत्ती के भी पिला अछंदी इंडिया रे समस्ते स्कूल बा एजुकेशन गारंटी स्कीम रो बा ब्रिज कोर्स समस्ते आसीबे 2003 रे समस्ते सेटा अटेंड करबे एटा गोटे फास्ट गोल समस्त को हमको इन्वॉल्व करियर अछि स्कूल को आनिबार अछि बाय 2003 and second goal was all children in the age group of 6 to 14 they have to complete 5 years of primary education by 2007 2007 सुधा जेति के भी पिला अछंती एनरोल हेइथिले 2003 सुधा समस्ते 7 मसिया सुधा प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करिवे आउ कोन थिला गोल 2010 सुधा से माने 8 इयर स्कूल को मध्य कंप्लीट करिवे समस्ते
जेतिकी सेही एज रो पिला इंडिया रे अछंती समस्त 8 वर्ष शिक्षा से माने 2010 सुधा कंप्लीट करिवे. दिस इज द मेन these are the some main targets or goals of SSC. So focus on elementary education of satisfactory quality. समस्त क्वालिटी एजुकेशन मध्ये हमको दबाको पड़िबो. समस्त जेमती भलो से गोटे भलो क्वालिटी रे पाठ पढ़िबे. Bridging of all gender and social category gaps at primary level by 2007 and at elementary education level by 2010. Gender और social category description जोटा रही biasness बा gaps ताकू हमको ब्रिज करियर अछि बा ताकू हमको हटेबार अछि. सबु गर्ल्स सबु कैटेगरी सोशल कैटेगरी रो पिला समस्त आसिक स्कूल रे 2007 सुधा प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करिवे आउ समस्त कोन कंप्लीट करिवे समस्त निश्चित भाव रे एलिमेंटरी एजुकेशन 2010 सुधा कंप्लीट करिवे. आउ कोन थिला टारगेट यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010. What do you mean by that? Universal retention means कहीं भी स्कूल को drop out. Yes. Drop out कहीं है पे. माने all children who get enrollment. समस्त enrolled है पे समस्त retained है कि रहिबे. So ता सहित मध्य strategies गुडा को लिखा हिची केमती आम इंस्टीट्यूशनल लेवल रे हमर एफिशिएंसी को डेवलप करिवा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस देबा इन्वॉल्विंग ऑल द वुमेन्स विलेज एजुकेशन कमिटी मेंबर्स एमन को सब करिवा एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनसीईआरटी एनसीटी सीआरटीज डाइट्स एडा को सब कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग जोटा एबे भी चली ची कम्युनिटी रे किछि मेंबर रहउछंती स्कूल रे समने सब मॉनिटरिंग करूछंती केमती पाठ पढ़ा चलची केमती हबा कथा ताकू मॉनिटरिंग करूछंती विथ ऑल ट्रांसपेरेंसी. सो एडा सब देइची देखिबो सपोर्ट लेवल रहला तापर एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम केतिकी गोटे मैनेजमेंट हमकू करियर छी कोन इंफॉर्मेशन केतिकी पिला आसले केतिकी पिला रिटर्न कले तार गोटे ठीक से हमकू डाटा दबार अछि. हैबिटेशनल प्लान्स माने जोडी जे जो जगह रे रहिचो स्कूल अछि बा पिला गोटे कम्युनिटी बा गोटे हैबिटेट रो तार प्लानिंग करिबा को एरिया रे हमें रहिची. हैबिटेशनल प्लान यूनिट हैबिटेशन एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग माने जो हैबिटेट रे पिला बा लोक रहिचंदी सेही अनुसार हमको गोटे प्लान करिया को पड़िबो केमति हमर सब पिला आसी परिबो. सो इन अकाउंटेबिलिटी टू कम्युनिटी को केमति हमें देबा दायित्व से माने सबुर ये करिवे बुझा बुझी करिवे. हां एगुडा को सब देइची एसएससी रा मेन स्ट्रेटजीज गुडा को रहिची. एनी डाउट देखो तुम बही रे भी अछि जेटा मु कहितली पढितु बतम माने सबु infrastructure resources we have to supply and different studies we have to conduct. Focus on teacher development, media development, priority to education of girls and disadvantaged group. एगुडा सब तार स्ट्रेटजीज गुडा को जेंडर ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दिया छै कि सबु पिला माने आसी परिबे आ जेंडर डिस्पैरिटी केमती हमर रिमूव हे परिबो एजुकेशन फील्ड ताको मध्य देखा जाय छै. Then literacy and life skill programs for adults, not only for elementary level students. Different types of agencies and different programs have been launched for providing literacy and life skill to adults also. Adults means what? So किछि जण अछन जो माने कि ड्रॉप आउट हे जाइछन स्कूल रु मध्य ड्रॉप आउट लेवल ताकर हे जाइछि बा कॉलेज रु तो से माने केमिति ताकर फर्दर कंटिन्यू करि परिबे ताकर एजुकेशन को ता पाई मध्य काम करा गला. जो माने इलिटरेट अछन तांको पाई का लिटरेसी प्रोग्राम किछि लाइफ स्किल प्रोग्राम सेमान को पाई मध्य करा गला. और नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2 अक्टोबर 1978 हला से माने केमिति जो माने ड्रॉप आउट अछन सेमान को पाई किछि काम करा गला बा गोटे स्कीम तांको पाई डेवलप हला. एंड नेशनल लिटरेसी मिशन से माने कि रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक एगुडा को सब जो माने किछि जान नाहती लेखा पढ़ा से मान को सिखेबा एटा मध्य लॉन्च हला. So I have given you one data related to literacy status.
हां लिटरेसी रेट केते रही 1951 टू 2011 कौन देखुछ को 1951 केते अछि एटा गोटे डाटा जोटा बहिरे भी अछि 74.04 आसी 2011 पाख पाखी 18 थिला सेटा अछि 74 रे तो मेल फीमेल जेंडर गैप भी मध्य धीरे धीरे कमी छी जोटा 18 थिला सेटा 16 पाख पाखी आसी जेंडर गैप तर से माने कैलकुलेशन करि छि कि एटा सब गोटे डाटा से माने सेंसस ऑफ इंडिया ताकू एटा पब्लिश करछि ता सहित लिटरेसी रेट इन 2021 एटा मध्य कलेक्शन करछि नेटरू देखिबो लिटरेसी रेट केते रहूची जोटा कि हमर बॉडी निश्चित भाव में 81 पाखापाखि ओडिशा देखौची निश्चित 71 80 ए पाखापाखि बहुत गुडे जेतु बहुत गुडे प्रोग्राम हमर चालुची तो बॉडी गलानी सब एडल्ट लिटरेसी रे कोन सब काम होईची ता ऊपर मध्य तम बही रे दिया जाईची जोटा कि बहुत गुडे डाटा गुडा को केवल बहुत गुडे बही रे देईची देखिबो एडल्ट लिटरेसी हम केमती से टार्गेट करथिले 2015 सुधा हेई परिबा एजुकेशन फॉर ऑल एडल्ट्स सेरा मध्य बहुत गुडे डाटा रहीची सेइतरे एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन इट्स ए mission to make all literate in our country through different types of program continuing education program ए through रे करि परिबे तो एथि पई कोन सब स्ट्रेटजी रही नेशनल लिटरेसी मिशन रो जेंति जिल्ला साक्षरता कमिटी गोटे रहउची जोटा कि सेही भला जो माने इलिटरेट अछंती बा पाठ पढी नांती से मन को मोटिवेट करबो से माने एटलीस्ट रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक एगुडा को सब रे से माने इन्वॉल्व हेई परिबे आ रही जिला साक्षरता कमिटी एनजीओस माने रही कम्युनिटी एजुकेटर्स माने रही जो माने से मन को मूव करूछंती मोबिलाइज करछंती केमति से माने एजुकेशन को पाई परिबे आ जन शिक्षण संस्थान जोटा गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोटा रहउची तार नॉन फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग बा न्यू लिटरेट्स मान को से पढेओ मिली संध्या समय रे बा इवनिंग क्लास मध्य सेथि निया जाउची जोथरे से माने पढी परिबे कंटेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेडा मध्य से मान को दिया जाउची जेमति तांकर डिमांड को देखि किना हेल्थ एजुकेशन ऊपर हला बा कोनसी रिक्वायरमेंट को स्किल इंप्रूवमेंट हला वोकेशनल एजुकेशन हला एगुडी को ऊपर मध्य इन्वॉल्वमेंट कराउची अच्छा केही एई भळे तमरो जो एनएलएफ सहित नेशनल लिटरेसी मिशन हो बा एई भळे एडल्ट एजुकेशन एक्टिविटीज रे के तमन को भितरे इन्वॉल्व अछ कि कोनसी गां रे हो बा तम एरिया रे हो निजे एक्सपीरियंस एटी शेयर करि परिबो एडल्ट एजुकेशन रिलेटेड किछि एक्सपीरियंस कार अछि कि स्कूल रे तो सर माने अछंती विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशन रु आउ कि एई भळे इन्वॉल्वमेंट अछंती कि एडल्ट एजुकेशन रे प्रौढ़ शिक्षा हेबो कि प्रौढ़ शिक्षा रे यस प्रौढ़ शिक्षा रे की एक्टिवली इन्वॉल्व अछंती कि आपण मान को भितरु निजे एक्सपीरियंस शेयर कले हम संग माने कॉलीग्स माने किछि सिखिबे हम कॉलेज तरफ बेले बेले हमें प्रौढ़ शिक्षा अभियान करि थाउ एवं विभिन्न प्रकार हमर बीएड कॉलेज रो स्टूडेंट्स मान को हमें नै किना किछि एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करथाउ जोति कि स्लम एरियास आउ विभिन्न एरिया रु हम पिला माने बीएड पिला माने हम कॉलेज रु जाई किरि किछि किछि एक्टिविटीज करै थांती पाठ पढै थांती संध्या समय रे से मान को गोटे घंटा दे किना से मान को पढा जाय थे सो दैट से माने एटलीस्ट ताको ना लिखि पारिबे हां ए सब एक्टिविटीज गुडा को होउची एवं एसीआईटी स्टेट काउंसिल जोटे रहिछि से मानकर गोटे मध्य ब्रांच रहिछि एडल्ट एजुकेशन को इंक्लूड करिया पय डिफरेंट यूनिवर्सिटी रे मध्य एडल्ट एजुकेशन कंटिन्यूइंग एजुकेशन रो गोटे ब्रांच रहउची जोथरे कि टीचर्स माने आउ तमरो प्रोफेसर्स माने बा रिसर्च करछथि आउ से मान को मध्य एजुकेशन दवा पय चेष्टा करछथि एई सब विभिन्न प्रकार रो मिशन त रहिछि ता सहित मध्य टीचर्स माने मध्य हमरो ट्रेनिंग कॉलेज रो हो बा स्कूल एजुकेशन रो हो तो से मान को मध्य इन्वॉल्व कराउछि डिफरेंट एक्टिविटीज रे सो दैट कंटिन्यूइंग एजुकेशन तांकर मध्य होउछि सो एटा को मध्य एनएलएम रे इंपोर्टेंस देछि नेशनल लिटरेसी मिशन रे सो इंपोर्टेंस टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोन समस्त जानछन जे एडल्ट माने मध्य तांका जो माने पाठ कंप्लीट कर पाना से माने कंटिन्यूइंग एजुकेशन रे
रहिकिना किछि सिखि परिबे. So this is all about your unit 4. Acha. Next is your unit 5. Unit 5 here it is related to informal education. So आमे जेमति डिस्कशन करूथिले फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एगुडा को सब रहिछि. What do you mean by informal education? Ma'am, informal education refers to a lifelong learning process where each individual acquire attitude, values, skill, and knowledge from the education, influences, and resources in his or her experience or environment. Okay. आउ के कहबो सरल भाषा रे की कहि परिबो? फैमिली सोसाइटी रो हमें जो एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन पाइतो सेटा होची इनफॉर्मल एजुकेशन. Acha. So it's a kind of education what we get from our society at our primary level of life. Yes ma'am. Yes ma'am. चिन्मय. अच्छा आउ के कहबे? Definition के तुमे कोन बुझिछ just in your language? मैडम मैम स्कूल जहाँ और टाइम कॉलेज टेबल नଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାମ ହଉଛି କି କେବଳ ଟାଇମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଯାଇ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାମ ଆମେ ସେଟା ଶିଖିପାରୁ. So you have Knowledge gained from experience without any pre-planned. without any स्कूल planning. कॉलेज रो जो ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था अछि से सब को फॉलो न करिकी आमे हम निजे एक्सपीरियंस निजे परिवेश निजे घर परिवार एमानक ठरु जो शिक्षाटा पाऊ सेटा को हमें इनफॉर्मल एजुकेशन कहि परिबा. निश्चित भाबरे without any plan. मैम एटा गोटे टाइप रो एजुकेशन जोथरे कि हमको सर्टिफिकेट मिलेनी किंतु हम लाइफ स्किल सब सिखि परथाउ. Yes. So without certification also we learn something new. Okay. So we can get this type of education anywhere at any time, any place. जो समय रे भी एटा आमे किछि शिक्षा पई बा किछि जिंस आमे नुआ जानि थाउ ए कोन से भी विषय रे. So informal education it is very important. And the term informal education means something without formality or ceremony, something that happens outside the formal system. So there is no rule, regulation, there is no discipline, there is no formality for getting education. So informal education is something like it's a lifelong learning. Anywhere, any place you are learning something, anything else you can learn. Any value, any knowledge, any skill, any attitude from your day-to-day experiences, from anybody, from your society, neighborhood, from your friends. So this is nothing but one type of informal education. So it's also adding to our knowledge and it's very natural and self-motivated. Sometimes you can also observe some children are there, they are observing others and autonomously they are learning something new. So they are not getting certificate, they are not getting any kind of force from outside, but it is a natural process. Human being or animals, they are sometimes they are learning by their own without any kind of formalities or any kind of proper discipline. So it is not pre-planned and it doesn't require any kind of teachers. It results in gaining experiences, updating our professional knowledge or special interest to meet our physical, emotional, intellectual, and social need. Sometimes we are having some type of motivation for nurturing our emotional health, intellectual urges, or social needs. At that time, autonomously we learn, voluntarily we learn. So there is no external force to help us to learn, but we in a very natural way we learn something at any time, at any place. Okay, so that is nothing but the informal learning. So there are some features of informal education. It is there in your books. कौन सब तार main characteristic के कहबो? जोटा लेखा भी है. So first thing is it is lifelong education. So it starts from your birth to your death, where any time there is at any age
there is no restriction for getting your education. जोटा देखिए ओल्ड एज रे मध्य लोक माने मोबाइल शिखुछंती विभिन्न प्रकार हॉबीज रिलेटेड कोर्स करछंती, so they are also learning, so there is no restriction for learning. Something you are learning, some language you are learning, some type of skills you are learning, so it is one type of feature. It is voluntary and on vertical horizontal continuum. What is that? Voluntary. Whether vertical means उपरु ताकर higher order किछि जनक ठारु तमे सिखुछ किबा तम समसामयिक किछि peer group रु सिखुछ, that is the vertical horizontal continuum. Means तमर upper level कि जदि अछंदी तमर superior जेटा हमें कहि परिबा, हां ताकरु तमे किछि सिखुछ किबा तुम सांग साथी हां से माने मध्ये हमकु किछि सिखै थांदी. So technique is learning environment, learning atmosphere, methods. That those are very flexible and very free. Okay. So social heritage सिखुछ, कौन सब सिखुछ? Cultural, social heritage एवडा सब सिखुछ. आउ कोन? जोटा कि रहला very different types of skills you are learning. It prepares individual for various complementary roles for tomorrow's life. So it is preparing other student or a particular person to move ahead. It emphasizes learning and gathering information. It is integrated education. It is open, non-competitive and non-prescriptive system of education. No one is competing here. You're very free. It is very open. It is open to all. The teacher's role is like that any other member of the society. So here you are not thinking that he is my teacher or the type of feelings are not there. Okay. So now coming to the importance or beneficiaries or some of the benefits. Benefits of informal education. कौन है इतने benefits को? What do you think? Anybody? Broader in scope, not limited. ଆମେ It ଆମ is ଲାଇଫ not. ସ୍କିଲ୍ ବି ଶିଖି ପାରୁଛୁ. Yes. ଆଉ କଣ? Ma'am, we can improve our problem solving processes. Anything else? Ma'am, it is very flexible and no time bound is there. It is not limited to any kind of time limit or time boundary. How kono? We can learn every time and everywhere. In every Anytime, everywhere. And every age. Acha. How? Ma'am, there is Anything no else? restriction to learn without a classroom. Informal learning is such a platform where we can get the knowledge at anywhere, at any place. Very good. How? Then informal learning ରୁ ଆମେ society ସହିତ adjust କରିପାରୁଛେ. Yes. Anything else? So it is very self-motivated type of learning. And whenever we are learning with our own pace. There is no pressure from outside. So whenever we are not learning का long term भी रही था experience ରୁ long term भी रही था जितने समय तमे नहीं पारिबो किछि भी प्रेशर नहीं तमे in a very open environment you are learning. So किस नॉलेज रो पूरा डिफरेंट होता है. हाँ. burden free भी था. Yes. अच्छा ज्योतिरंजन कौन कहूछ को? मैडम नो प्रिपेयर एडवांस. How? It is not a systematic process like college, university. Acha. This is not a significant learning plan. Acha. So here self motivation. So it is important because sometimes what happens, some people you think देखिबा गोटे जगह रे एग्जांपल दबा जने जने इंजीनियर जो काम करि न थांती बा करि पारु न थांती सेठी जने टेक्नीशियन बा जने जने मेकानिक बहुत सुंदर भाबे से कामटी करथन जोटा इंजीनियर माने भी करि पारथि.
So that is Then the it is essence free of this from informal education. ସେମାନେ it କରିଥାନ୍ତି is free from financial cost means expenditure or infrastructure. Hmm. So there also, that is the essence, so that is the importance of informal education. So formally जो कि जिनसे भी कहीं सीखी ना था, दूसरा informal education हमें बहुत बड़ी जिनसे सीखी दी था. हाँ, people of all ages have not received formal education. So तांको पाएं का informal education बहुत ही important. जो हमने जाई पर ना थी, cost पाएं कोटी admission करी पर ना थी. देखियो बेले बेले से मैंने जो विभिन्न प्रकार मोबाइल विभिन्न वेबसाइट रो बहुत गुडे कथा शिखि दियो तमे सेटा आश्चर्य होतबो जे केमती एते सुंदर भाबरे से माने सब जिंस जानि परछथि किंतु आमे गोटे स्कूल पढी कि एते कथा जानि पारुना बिकॉज़ ऑफ मैम देयर गोटे एग्जांपल कहि परिबी कि हां यस यस प्लीज मैम जो हमर उत्तराखंड रो उत्तरकाशी रे जो टनेल टा भुसुड़ी पड़िथिला से न्यूज़ टा तो समस्त जानि थिबे सेतुळे जो श्रमिक माने फसी की रहिथिले 7 दिन 8 दिन पर्यंत सेतुळे बहुत सारा मशीन गुडा का आसिला बहुत काम हैला मझिरे पुणी माटी धसी गला बोली तांकर उद्धार कार्य हे पालानी किंतु लास्ट को गोटे रैट होल माइनिंग बोली का गोटे श्रमिक ग्रुप थांती जोटा को इंडिया रे बैन करा जायछि से माने विपदपूर्ण भाबे खणी मानकरे काम करंती किंतु लास्टली से रैट होल माइनिंग रो श्रमिक माने ही उद्धार करिया को सक्सेस हेथिले तो सेटा भी हमें कहि परिबे जे गोटे बिग अचीवमेंट से मानकर एक्सपीरियंस एते अधिक जे इंजीनियर मानकर कार माने इंजीनियर मानकर जोटा कर पलेने से माने सेटा करिक देखै पाथिले फळ श्रमिक माने उद्धार हे पाथिले यस आउ भी मध्ये देखियो वेरी गुड ज्योति पन्ना आउ गोटे मध्ये एग्जांपल मु देबी जेमति कि मु देखिथिले गोटे वेबसाइट रे जे जड़े ट्राइबल बॉय जो कि जे कि +2 भी पढ़ना +3 भी पढ़ी ना कि से अमेरिकन इंग्लिश बहुत सुंदर भाबरे कहउछथि आ क्लास भी नउछथि ऑनलाइन क्लास नउछथि तो सेमती भी होउची जो माने कि इनफॉर्मली किछि लोकन संगे मिसी की हो बा इंटरेक्शन रे हो से माने से स्किल टा को बहुत सुंदर भाबरे ताकू एक्वायर करूछथि आउ से जिनसटा को मध्य बहुत भलो भाबरे अलगा मन को मध्य पढ़ाई पारछथि सो दैट इज द इनफॉर्मल एजुकेशन केवल लर्निंग हेले गला स्कूल जाउछ कि कॉलेज जाउछ सेटा बड़ कथा नो बट निजे केमिति कथाटा को बुझी पारछ आ ताको अप्लाई कर पारछ सेटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट दैट इज द इनफॉर्मल एजुकेशन दे समाने स्कूल टोटल जाई नाही कॉलेज जाई नांदी बा कोनसी इंग्लिश टीचर पाकरे फॉर्मल एजुकेशन नहीं नांदी बट ड्यू टू देयर इंटरेस्ट दे आर फॉलोइंग सम so they are following some type of discussion or they are doing some type of discussion with others and from that they are learning something so it is very important hela so it is a learner of formal education institution during the period of study formal education institution ro big samane madhya asiki path padhi paribe informally educated and semi educated people oh eguda ko madhya rohuchi e ro so टिके हाँ टिके रह जाओ so in that context we can say that is informal education is very very beneficial to all and we can find that people जो माने रहिछन्ती विभिन्न प्रकार रो जिंस शिक्षा को चाहछन्ती रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो कल्चरल हो लीजर रिलेटेड एक्टिविटी जेमति कि बहुत गुडे देखिबो बे कुकिंग चैनल गुडा को हलानी बा स्टिचिंग चैनल हेलानी स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल्स गुडा को अछि हां जोटा कि पिला माने केही जोटा आमे भाबुतबा कि हां आमे एई जिंस हमर हॉबीज अछि किंतु टाइम अभाव रु बा कोन से एक्सपर्ट कठर आमे किछ सिखि पारु ना तो सेही टाइम रे कोन होय बहुत टाइम रे ए जो इनफॉर्मल गॉसिप हो बा इनफॉर्मल डिस्कशन हो सेहिथु मध्ये आमे बहुत गुडे कथा जानि परिबा आगुरु कोन ए जो नेट नथिला कोनसी प्रकार कंप्यूटर नथिला फोन नथिला तथापि देखियो से टाइम रे कोन गोटे गोटे महिला मान को ग्रुप हो बा सेठी समस्त मिसी किना गोटे गोटे स्टिचिंग हो कुकिंग हो से विषय से माने कथाटा हे कि बहुत गुडे कथा सिखि पारतली हमरो मीटिंग हो विभिन्न प्रकार बॉयज माने ताकर विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज उडा से विषय डिस्कशन करि पारतली सेही दुरु से माने लीजर रिलेटेड एक्टिविटीज गार्डनिंग
गार्डनिंग धर करूचो सेथिरे मध्ये से माने गोटे इनफॉर्मल डिस्कशन करिकिना केमती कले भलो गार्डनिंग करा जाय परियो से विषय मध्ये से माने डिस्कशन करिकि से बहुत गोटे जिंस सिखुथिले एवं करूथिले सो दैट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन आमे कहि परिबा एंड इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर लर्निंग सम टाइप ऑफ न्यू थिंग जो तमे देखियो बेले पिला माने समस्त गोटे गोटे ग्रुप करथांती से माने विभिन्न प्रकार एसोसिएशन हो बा इनफॉर्मल ग्रुप होइथा से गोटे गोटे जगह को संध्या वाले जानती कथावार्ता हुअंती एवं बहुत गोटे कथा से माने जानि पारथांती जदि हमें न मिसिबा न शिखिबा का थारो सांग मान थारो हो बा घर के रिलेटिव्स मान थारो हो तो हमें ए सब विषय जानि परिबानी अच्छा इट गोटे देछि पिक्चर टा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सो इट इज आल्सो देयर इन योर बुक but you must know difference between these three channels of education formal education means kon dekhu jo tame ko formal informal or non formal what are the differences between these three types of education ଫର୍ମାଲ ମିନ୍ସ ଆମେ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ପଡିଥାଏ मैम फॉर्मल एजुकेशन गोटे स्कूल यूनिवर्सिटी गोटे इंस्टीट्यूशन रे होते गोटे प्रोसेस वे रे होते इनफॉर्मल एजुकेशन होचे हमर एवरीवेयर जोटी के हम सिखि जाऊ फैमिली सोसाइटी एनवायरनमेंट रू आउ जे नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमर जेमिति ओपन डिस्टेंस लर्निंग रहले लाइक इग्नो एमिति हम नॉन फॉर्मल माने वोकेशनल जिंस स्किलफुल होआ पई नॉन फॉर्मल एजुकेशन यूज होते one type of training yes so formal is more structured rigid and more regular we can say regularly you are learning something and some differences are there but in case of informal it is slightly formal slightly non formal dita prakar jinsa hochi eta mid bag hochi non formal ta informal very flexible and very you can say it is not coming under any kind of rule regulation or discipline the informal totally everywhere you can learn does not follow a syllabus it is unstructured it is voluntarily due to your own interest or motivation you are learning and is dependent on your intrinsic motivation if you want to learn about gardening cooking whatever it be you will try to interact with such type of persons who are very much expert with this or having some type of experiences related to that particular stream and it is your own motivation to find out this type of situation or this type of environment where you can learn and no learning purpose in mind you don't have any kind of purpose no learning purpose माने मते पढिबार अछि पास करियार अछि एग्जाम अछि मु करिबी नो असेसमेंट किछि दरकार नै okay assessment माने regularly you have to give some type of examination or some type of assessment to find out how much you have progressed सेति के भी किछि formally informally तमको किछि करिबार नै okay so it is when features of informal education and formal education is very rigid okay but in non formal education it is little bit structured bit unstructured and some type of other types of rule regulations are there so it be bahire tike deichi dekhibo now coming to agencies of informal education what are those agencies ko to ame informal education ame ko to pai pariba को सोर्स रू बा को एजेंसीज हमको सप्लाई करथांती कोन इनफॉर्मल एजुकेशन ठीक सो फर्स्ट के रहछंती फैमिली peer groups organization providing various educational programs voluntarily they are some NGOs they are providing consumer education and information and communication technology जोटा ICT आजकल समस्ते मोबाइल ले किछि सिखुछंती ओके सेई थ्रू रे तमरो बहिरे एई पांचटा एजेंसीज दिया जाय जो माने इनफॉर्मल एजुकेशन को सप्लाई करछथि बा तांकठु हमें इनफॉर्मल एजुकेशन पाई थाउ फर्स्ट इज योर फैमिली व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली मैम हम फर्स्ट फैमिली रे ही माने शिक्षा आरंभ करता में समय सिखाती केमते बाहर तुमे बिहेव करबो केमते कासा कथा हबो संस्कार चाली चलनी विषय रे सिखाती हां so family is a social organization
जोठी हमें समस्ते रही थाउ हमर रिलेटिव्स मन सहित रही थाउ and it is derived from the Roman word famulus which means servant. Family they all serve, you have to serve something. Okay, so family जो मैं रोज को बहुत काम होती समस्तंकर काम करछु, so it's like that servant, you are servant. Family is a primary unit of social system, it is the first unit of society, it is the first phase of your society. It consists of বিভিন্ন family members and family is key of social system. Family is an institution of social system. Okay, and is a part of social system. Family is very important. So importance of family in the education in the child. So speech को जागरे तो first पिला सीखी था family रू ही सीखी था कौन प्रथम सीखी था any movement, any language, how to behave, how to speak, सब जिनस तुम भी जदि पिला मन को प्रथमे कौन सिखै त केमती खाइबा केमती निजर केयर नबा डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट्स केमती बिहेव करिबा केमती कथा कहिबा केमती अलगा किछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करिबा केमती पाठ पढिबा ए सब विषय फर्स्ट प्लेस, इट इज द फर्स्ट फेज institution where you are learning something, how to live together, how to work together, how to help each other. So it is the first phase. जो देखियो तो मैं गोटे फैमिली रे ए सब जिंस न थाए, फैमिली मेंबर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग at that time you will find that those students or those children, they are also not having those type of behavior or those type of behavioral qualities. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା କେମିତି କାମ କରିବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ଯେମିତି ଶିଖା ହେଇଥିବ କଲଚର ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ପିଲା ତିଆରି ହେବ. So family is the first place where students learn informally or children learn informally. जोटा कि कौन सी प्रकार सर्टिफिकेट दिया जीवनी बट just because of that love cooperation or this type of emphasis they are learning something. कौन सब सीखी थांती? The child gets three important help from the family, their affection, protection and socialization. So socialization ए सब जिंस से माने सीखी थांती एवं से मान को ठारू पाई थांती कौन अफेक्शन पाई थांती प्रोटेक्ट करिया निजो केमती प्रोटेक्ट करिया फैमिली को केमती प्रोटेक्ट करिया केमती सोशलाइज हबो ए सब विषय फैमिली एनवायरनमेंट जदी हमरो हैप्पी एंड हार्मोनियस थिबो ताहले हमें भलो प्रकार रो informal education मध्ये देई परिबा. The impression will be good. So many educators they have given emphasis on this family as an it's a kind of informal agency we can say. Then function of family तो बही रे बेरा सब देइची देखिबो. It will provide some type of affection to the child, economic security to the child, educational security to the child, protection, recreation, religious activities एगुडे को सब सिखते स्टेटस social pattern behavior केमती करिवा काहा सहित केमती कथार्ता करिवा ए सब जिंस आमे प्रथमे फैमिली थारो ही सिखि थाउ. आउ कोन सिखि थाउ के कहिबो? फास्ट फैमिली रो हमरो बिहेवियरल डेवलपमेंट हेता सोशलाइजेशन हेता लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट हमरो फैमिली रो हेता जेमिति को वन वर्ड टू वर्ड हम फैमिली रो फास्ट सिखिताउ तापरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अफेक्टिव डेवलपमेंट फास्ट होची फैमिली रो हमें डेवलप हेता है सब. मैम साइकोमोटर डेवलपमेंट भी है तो से मन को न्यूट्रिशन हेल्थ वगैरह सब फैमिली ऊपर डिपेंड करे फर्स्ट. Ma'am, mother is our first teacher and family is our first school. Yes. मैडम एटा ट्रांजिशन टोटली इन्फेंसी टू नै कि एडल्टहुड ता से तो ओल्ड एज पर्यंत टोटल ट्रांजिशन हम फैमिली रो हम पाई थाओ. Yes. इनफॉर्मली हमें सिखिता बुढ़ा हेई गला भी ओल्ड एज हेले भी हमें बेले बेले कोन पता हम सान बयस रे पिला को भी किछ जिंस सिखिता जे टेक्नोलॉजी हला से दे आर मोर फास्टर देन अस से मान को मध्ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमें पाई थाउ किछि भलो जिंस से माने भी कहि थांती तांका थारु मध्ये हमें किछि सिखिता नुवा स्किल मध्ये सिखिता सेमति नुवा जे केवल चिल्ड्रन माने सिखि थांती मध्य वयस्क हो बा ओल्ड एजेड हो जे भी अछंती फैमिली रा डिफरेंट पर्सन थारु किछि ना किछि जिंस से माने सिखि थांती. सो इट इज ए इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जोटा हमें कहले. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंसी इज योर पीयर ग्रुप. According to Mark Iver,
and pairs. A group means any collection of human beings who are brought into social relationship with one another. Group mane kono? Any kind of association ame kahi pariba, where or a relationship ame social relationship kahi pariba, jo mane ki paraspar sahita misuchanti ebang semanka sahita interaction korushanti. So group. So peer group, what do you mean by peer group? Peer group kono? Ma'am, peer group provide perspective outside of the individual's viewpoints. ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍କୁଲ ରେ ବା People of same Maybe age group, we same can age say. or different age. yes, So इथे तो ma'am. बहिरे भी देइछि दी प्रकार ग्रुप ऊपर एम्फासिस दिया आइछि गोटे प्राइमरी ग्रुप आ गोटे अछि सेकेंडरी ग्रुप. So some type of differences are there. Primary groups means they are intimate, personal and informal relationship. But secondary group टिके ताठो टिके डिस्टेंस रे रहिबो. Impersonal एते पर्सनल नो बेले बेले कैजुअली हम किछि फ्रेंड को सहित मिसताउ एते मिसि न थाउ डिस्टेंस रिलेशनशिप हम डिस्टेंट रिलेशनशिप. But primary group members are they are having long term relation and lifelong किछि सांग थिबे बहुत क्लोज सांग सेमान को संगे हम पूरा सब दिन पई सेमान को संगे कांटेक्ट रहि थाउ. बट सेकेंडरी ग्रुप कोन किछि पर्सन तमने जेमति अछ एम एजुकेशन कछ हां सांग अछु तापर किछि वर्ष पर सब भूली जिवो. शॉर्ट टर्म टेम्पोररी पर्पसफुल किछि पर्पस सैटिस्फैक्शन ला पर तापर ताको भूली जिवो सेइ भले. Then primary group हला we develop our self identity or who we are. So तांकर गोटे ग्रुप रहिथिबे सेमान को संगे गैंग रहथिबे तांका सहित मिसिबे सब पूरा. But here we meet our lifelong partners through this work, school, association एगुडा को सब सम रहउची. But family member, close friends एगुडा सब primary group रे रहिची. So जा भी हो primary group हो किंबा secondary group हो peer groups. But peer groups मानकर सहित ही through ही आमे बहुत गोटे जिंस सिखि थाउ. Now coming to different features or classic organ sorry एटा कोन मैडम टिके करियला मैडम हां को आज्ञा ताले आमे पीयर ग्रुप कहले ताले प्राइमरी ग्रुप एवं सेकेंडरी ग्रुप उभय को नै परिया. हां ओके मैडम थैंक यू. तार गोटे देइची डिफरेंस तम बही रे जेतरे पढिबो देखिबो सेतरे देइची डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पीयर ग्रुप्स को भलिया केते प्रकार ग्रुप रहिबे. तो सेटा टिके तमे तो कंफ्यूजन होबनी सेटा इंक्लूड करिची. गोटे प्राइमरी ग्रुप अछि गोटे सेकेंडरी ग्रुप अछि. तो प्राइमरी ग्रुप टा माने पूरा सब बळे सामान को सहित मिसो सामान को सहित पूरा क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स जो माने रहिचो सेही भलिया क्लोज रिलेटिव्स किंबा तमरा निज नेबरहुड रे किछि पर्सन थिबे जो मन को सहित पूरा क्लोज फ्रेंडशिप तमर रहि थाए. बट सेकेंडरी ग्रुप इट्स ए फॉर्मल काइंड किछि सांग सहित तमे एबे भी अछो बट ताको चिन्हिन बस एम्ति तमे ताको सहित कथा करिवो जे डिस्टेंस तांको भितरे सेटा मध्ये रहिछि. तो पीयर ग्रुप्स दुई प्रकार रहउछि. Whatever it be, primary group or secondary group, but we can get scopes to learn something informally from both the groups. तांको थारु प्राइमरी हो बा सेकेंडरी तांको थारु आमे किछि सिखि थाउ. So what are the characteristic features of a group? Group रा कोन सब common characteristic features रहिछि. So these are the characteristic features तमे कहि परिबो कोन सब लेखा छि को. गोटे हला तुमरा समस्त को भीतर feelings of oneness. आमे एक समस्त मिसी की एक रहिछु समस्त को कॉमन इंटरेस्ट रहिछि. म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस परस्पर को मानिबा. कॉमन वैल्यूज हाई एक्सपेक्टेशंस. मेंबर पोजेस वी फीलिंग आमे समस्त गोटे ग्रुप रो सेमति थाय ना ग्रुप स्कूल रे हो कॉलेज रे हो अलगा ग्रुप सहित हम मिसी उनी आमे हमर गोटे अलगा and members are interrelated in many ways. Members are expected to obey the norms. जहा रूल रेगुलेशन अछि हम ताको मानि कि चलिबा एई भलिया. So different organizations are there for educational program, for providing various educational programs. जेमति कि Young Men's Christian Association, Young Women Christian Association, Bharat Scouts and Guide Organization, Nehru Yuvak Kendra. So they are providing different types of activities they are organizing where they are getting closer to each other. ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି. କେମିତି କଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକର୍ସନ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ପିକନିକ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି. ଆଉ କଣ ଏକ୍ସିବିସନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ମିଟିଂସ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ ରୋଲ ପ୍ଲେ ସିମୁଲେସନ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ
ଯେତେବେଳେ କରା ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବଣ୍ଡିଂ ବଢୁଛି ଆମେ କେତେବେଳେ ବଣ୍ଡିଂ ବଢିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶିକିନା କାମ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତମର ରହିଛି ନା କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା ଗ୍ରୁପ ରେ କିଛି କାମ କରିବା so whenever we are working through this group work we are interacting with each other and from that interaction we learn something from our friends are you getting केमती हम शिखी था पीयर ग्रुप केमती हेल्प करता शिखिया ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ केमती करता है ना ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାଉ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା କିଛି ଶିଖିଥାଉ ହେଲା ତ ଦେଖ କଣ ସବୁ ରହିଛି कौन सब एक्टिविटी करा जाए ट्रेनिंग इन सोशल वर्क कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हॉस्टल फॉर वर्किंग एंड स्टूडेंट वुमेन रिक्रिएशनल एक्टिविटी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एडल्ट रिक्रिएशन एडल्ट एजुकेशन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोफेशनल एंड बिजनेस वुमेन ग्रुप क्रेंचेस एंड डे केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन काउंसलिंग करियर मैरिज एंड फैमिली लाइफ एगुड़ा सब डिफरेंट एक्टिविटीज रे हम ताको इन्वॉल्व करथो एवं सेइथरु मध्य किछि ए जो एसोसिएशन गुडाक रही एमने सब ये एक्टिविटी गुडाक करि बुझी पाइल एवं सेइथरु से माने परस्पर टू बहुत गुडे जिंस बहुत गुडे स्किल्स गुडाक मेनली सिखि थांती अच्छा एरे सब पढिबो हाउ गुड रही कंज्यूमर एजुकेशन so it's a consumer education कौन भाबुच होइतबो any idea मैम कंज्यूमर हेल्प डेस्क माने जे लोक माने कंज्यूमर मानक सहित कन्वर्सेशन करंती से मानक ता पूर्वरु किछि ट्रेनिंग दिया जाउथिबो मे बी कंज्यूमर को किछि इन्फॉर्मेशन हां मैम माने जेतेबेले जण मार्केटिंग माने किछ करबा चाहूँ सेतेबेले फर्स्ट प्रिपेयर करा जाए माने गोटे कैपेबल करा जाए माने तुम केमती मार्केटिंग करबो केमती कोन सेलिंग करबो केमती तुम प्रोडक्ट माने समस्त जानबे तुम प्रोडक्ट विषय रे सेमती जदि तुम माने कि फेक करछि तुम सेटा केमती जानबो ता पय केमती कोन माने प्रिकॉशन यूज करबो ओके कहबे so it's a kind of informal education agency जो कौन सी प्रकार सर्टिफिकेट दिया जाए बट you see some इन्फॉर्म दिया जाएगी हां मैडम प्रैक्टिकली सिखा हुए दिया जाता है इन्फॉर्म प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हां कौन सी भी प्रोडक्ट तमे किनुछ गोटे लेखा ता भितर तमे गोटे आयरन किना किछि जिंस किना केमती यूज करबो ताको को भलिया तमे ताको मेंटेन करबो तो ता रिलेटेड किछि तमको इन्फॉर्मेशन सेइतरे दिया जाइथाय ओके केमती ताको यूज करबो जाइथा ना पेपर बाहर ता भितर गारंटी तमरा जो वारंटी कार्ड जो थाए सेइतरे तमर बाहर थाए सेउडा को सब तो सेडा कोन तो सेइथरु मध्य हमें किछि कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड किछि स्किल किछि केमती यूज करबा किछि एटीट्यूड किछि वैल्यू एगुडा का मध्य हमें सिखि था So it is a consumer education changes people's attitude, buying behavior, empowers them and build their confidence. It is thus a social economic movement that protect consumers' right against sellers. Consumer education focuses on environment, conditions of producers, globalization and sustainability. जो भी जिनस आमे यूज करूछु बा जो जिनस को आमे परचेस करिबा सेटा को भलिया क्वालिटी रो ताको कि भलिया आमे यूज करिबा कोन ता रिलेटेड एथिक्स रहिछि कोन ता रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रहिछि ए सब जिनस को आमे ताको जणे देथाउ सो दैट हम कंज्यूमर मध्ये प्रोटेक्टेड ही रहिबे से माने मध्ये कोन जगह रे ठकी हेबे नै एवं बहुत जगह तुम देखुतबो माने धर गोटे एग्जांपल दोछि गोटे चिट फंड रहिछि तमे आजि 10 टका जदि रखिबो 10 दिन परे सेटा 100 टका हेजिवो हैला किबा 2 दिन परे सेटा डबल हेजिवो 100 टका रखिले से डबल हेजिवो एई भलिया कथा गुडा को मध्ये कुहा जाय थाए एवं लोक माने ताको मध्ये अनफॉर्चूनेटली बिलीव करिकि बहुत गुडे टंका से रखि थांती एतरे कोनटा मेन प्रॉब्लम रहउची देयर इज ए लैक ऑफ एजुकेशन ओनली सेमान को एजुकेशन ही नाही ताको पाके इन्फॉर्मेशन ही नाही
जे एमिति केबे हुए नै तार ओडे रूल रेगुलेशन अछि इकोनॉमिक जे भी रोज इकोनॉमिक्स रे जानथबे रूल्स रेगुलेशन तार रहिछि कमर्शियल एक्ट गुडा कर रहिछि ताकू नेकरी ही सेही भलिया बिजनेस करा जाइथाय बा सेही भलिया हमरे काम करा जाइथाय ताकू जदि हम न जानिबा हम सेथरे तर चिट फंड हां हम बिलीव कर हां सेंती हेउथबो निश्चित मु आज निश्चित भाबे लाख टका रखि देबी काली कि सेटा मो 2 लाख टका हे जिवो तो एटा गुटे ब्लाइंड बिलीव भलिया ही काम करे तो सेही जगह रे हमको तो एटा तो के ए रिलेटेड कौन सी प्रकार सर्टिफिकेट के ही जेतु कॉमन पीपल समान को दरकार नहीं थे कौन सी प्रकार सर्टिफिकेट ए भलिया जिंस रे जानिबा समान का आवश्यक नै बा ताकर रिक्वायरमेंट मध्ये ना कि इंटरेस्ट नै तो से माने कोन करबे से मान को ए कंज्यूमर एजुकेशन जोटा रही छि से मान को से इनफॉर्मल चैनल रे दिया हेता सो दैट से माने टिके अटेंटिव हे थांती जानि थांती कोनटा हमें किनिबा कोनटा न किनिबा से रिलेटेड मताकर आईडिया आसी जाइथा ओके सो से रिलेटेड मध्ये एजुकेशन रही छि पढिबो कंज्यूमर एजुकेशन कौन सब ऑब्जेक्टिव रही आ गोटे तुम information and communication technology ICT related so this is also one type of agency to provide informal education so every time you can find ICT related media like press radio TV digital media tape recorder film strips audio cassettes electronic media जोटा तुम रही फोन आजिकल स्मार्टफोन एगुड़ा को सब आसी ICT भितर so through that also you are learning it's a informal so you are not getting certificate anytime you are using your mobile phone smartphone you are accessing some information and you are learning so it's a kind of informal channel or informal agency is not it ICT समस्ते यूज करछु ना नहीं Yes, ma'am. Yes, ma'am. anytime you are interacting with your peer groups also you're anytime through this ICT you are accessing WhatsApp Facebook there also you are going and you are learning something informally कौन पाई तुमको सिटी इंटरेस्ट लाउच किछि इन्फॉर्मेशन तुमे जानि पारुछो किछि नुवा नॉलेज जानि पारुछो so there you are also motivated to discuss with your friends so you are also chatting with your friends किछि लोक एबे भी करूछो फोन धरि कि ना मैडम एटी कोन कहउछंती सेठी बसे WhatsApp देखुछो कथार्ता होउछो is not it काहे की because you are also learning something from your friends some information you are accessing that is why you are interacting so it's a kind of informal education is not it so Yes, ma'am. मैम एइथरे भी इनकॉल मेसेज केते जण करछंती करूछंती किछि पिला करछ मु देखि पारछु एटू हला so what is the usefulness of this ICT in education kon education related kon roichi teacher student related ame jem interaction korchu it's a kind of ICT technique here in online class we are going the online counseling class is going on so you are learning something you are interacting with me I can ask you some question I can provide you some type of information you are also asking some doubts so it is nothing but it's a tool so this tool is also informally useful so sometime you are using WhatsApp and Facebook they are also you are chatting with your friends so it's a media through which you are also interacting and you are learning something and आउ मध्य ICT रा बहुत इंपोर्टेंस रही छी जोटा कि इनफॉर्मल एजुकेशन एनी टाइम यू आर सर्चिंग समथिंग इन द गूगल इंजिन गूगल ले किछि जिंस पाउछ काहे कि एटा इंपोर्टेंट रही छी इंपोर्टेंस रही छी पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग सो एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेस कोलैबोरेटिव लर्निंग जोटा कहूची मु किछि पिला को तमे इनफॉर्मली तम संग मान किछि क्वेश्चन पचारि पाउछ इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन कन्वीनियंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट टाइम you can interact with others so some type of ICT tools are there television radio computer printer scanner mobile phones camera Wi-Fi these are some technical tools those are utilized for the informal education okay so एगुडा सब देखिबो एटा वर्तमान तो जेते जेते कि तम बहिर देइची टूल्स टेक्निक्स दैट बहुत गुडे जिंस आसी गलानी एबे technologically we are more advanced so these are some of the tools and techniques those are useful for providing education informally जे कोन से जिंस थरा जानिया को चाहू जो संगे संगे गूगल सर्च रे तमे ताको सर्च कर दोछ फोन रे इंटरेक्शन कर दोछ पचारि दोछ तमे संग साथी को सहित मिसिन एट बट टीवी रे किछि प्रोग्राम रो तमे संगे संगे जानि पारुछ सो एगुडा को सब डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स so this is all about your informal education
And another unit is there. There is unit 6. Actually, it is coming under your block 2, policy planning and implementation. So till now we have learned about different agencies or different types of informal agencies which are helpful for us to learn something. But in unit 6, we are going to learn about different policy planning and implementation. Mainly in this particular unit, they have given emphasis on National Policy on Education 1996 and Program of Action 92. ए उपरे ही दिया है इम्पोर्टेंस एवं सेही जिंस गुड़ाक ही बेसी जोटा आम पढ़ी से पार्ट गुड़ा को एम्फासिस दिया जाए जेहेतु टिके पुराना रही जाउची कोर्स मटेरियल टा तो से माने सेही एनईपी नेशनल पॉलिसी को बेसी इम्पोर्टेंस देइछंती एथिरे जोटा आम ऑलरेडी पढ़ी सारेनी एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी this education policy is a kind of document which project a vision of future कौन हेई पारिबो कोनटा पॉलिसी प्रोग्राम जोटा हम डॉक्यूमेंट्स गुडा काहे कि तैयारी करा जाय थे why are we creating such type of policies for our nation because we are visualizing the future of education with our future citizens human capacities competencies केते प्रमोट हेई पारिबो ए सब ऊपर को देखि के हमें पॉलिसी प्रोग्राम्स गुडा को नेशनल लेवल ले हो स्टेट लेवल ले हो ताकू तैयारी करथौ सो फ्यूचरिस्टिक माने फ्यूचर को देखि के एटा बना हेई था एटा सेही जिंसडा ही लेखिछि मु सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन केमती हला ए पर्टिकुलर यूनिट केवल नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा रही 1986 ताकू ही बेसिकली लेखा हेछि तो जोटा की हमर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन को कौन इंपोर्टेंस दिया है सेकेंडरी एजुकेशन पाई कौन लेखा है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 सेगुडे को सब दिया है एवं टेक्निकल एजुकेशन ऊपर ओपन एजुकेशन ऊपर ताकू कौन कुहाई से विषय रे तार कौन सब स्टेटमेंट देछि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 से विषय ही बेसी लेखा है इधरे तो ईसीसी ऑलरेडी हमें पढ़ी छे आ गोटे यूनिट रे according to NP 1986 and POA 1992, early childhood care and education will receive high priority. So they are giving more importance to early childhood education and integrated child development service. ताको बेसी importance इतरे दिया जाए कारण सही टाइम रे तुमे भाबो 1986 रे एते नर्सरी स्कूल एई ऊपरे केही importance देउ नथिले समस्त प्राय तो क्लास 1 रो ही एनरोलमेंट होथिले प्राय तो किछि एंती कंपलसरी नथिला जे समस्त सब छुआ को तमरा नर्सरी स्कूल बा ए बडा के जिबा को एलकेजी यूकेजी की जिबा को पड़िबो समस्त विदाउट दैट आल्सो दे आर गेटिंग एनरोल्ड बट आफ्टर NP 1986 POA they are giving importance to this early childhood care education and ICDS ना पड़िबो आंगनवाड़ी एगुडा को सब केमती हमरो बेसी फंक्शनल हबो ता ऊपरे 1996 एगुडा को सब एम्फासिस देइची एंड एलिमेंटरी एजुकेशन दे आर गिविंग एम्फासिस ऑन यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन जोटा हमरो सर्वशिक्षा अभियान रे रिफ्लेक्ट हला 1986 रो अनुसार सेटा ही से माने ही लेखिथिले आगरु 1986 रे यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट यूनिवर्सल रिटेंशन and substantial improvement in quality. Those points are written in this NPE 1986. As per that, this SSA, Sarva Shiksha Abhiyan, DPP, एगुड़ा को सब तारे अनुसारे आसिले functional hele. So they have focused on child-centered approach of teaching, universalization of elementary education, and use of different types of teaching learning materials, maps, chart, toys, blackboard. It has also given importance to library and it has also emphasized that government, local bodies, voluntary agencies must be involved. जोटा कि different committees उडाक school committee रे रहुची एमती mother teacher association एगुडाक सब रहुची बा local people आसी इतरे emphasis दोचंदी सीटा रहिला Universal Elementary Education UE सर्व शिक्षा अभियान ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एगुडा को तापरे फंक्शनल हला देखिबो इथरे तार ओडे डाटा भी देछि MHRD 2006-7 रे
कौन सब एक्सेस अच्छी एवं कौन अचीवमेंट हमर हैला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जेंडर पैरिटी इंडेक्स एगुडा को सब तार गोटे डाटा देछि सेइतरे universal provision facilities universally we have to accommodate all into our education system. Enrollment and retention already we have discussed about that. Girls education under SSA जोटा कि हमरा NPEGEL National Program for Education of Girls for Elementary Level जोटा कि लॉन्च हला सेप्टेम्बर 2003 रे सर्व शिक्षा अभियान संगे सेटा मध्य चलिला जोते गर्ल्स मान को पई स्पेशल प्रोविजन रहिला. So they have developed around 3,450 model schools for girls, 1.97 lakh teacher को sensitize करा गला, skill building करा गला, विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उडा को दिया हला. मैम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी थिला कौन हला हम जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी सेते बड़े केजीबी भी जोटा रही सेटा भी कस्तूरबा देखियो गोटे गाँ रे मध्य सेटा स्कूल उडा को सब हेची ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जोटा कि हमर हेतिला सेतरे सेतरे कोन प्रोविजन मेनली थिला 2 रिजनेबल लार्ज रूम्स नेसेसरी टॉयज ब्लैक बोर्ड्स मैप चार्ट एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स एगुडा को सब थिबा कथा आ नॉन फॉर्मल एजुकेशन adopt most suitable model for non formal education se mane rahila the open basic education program elementary level and non formal education jota rahila mainly amara ei time re constitute hala NIOS National Institute of Open Schooling ha tam janithibo जोटी कि माने स्कूल जो माने जाई पारु नाहंती बा ड्रॉप आउट होइछोंदी से माने इतरे एनरोल हे परिबे आउ देखो हमर इग्नू मध्ये तितरे 19 सेई पाखा पाखी 85 86 ता परे ही सेई पाखा पाखी ही ओपन हेची जेते जेते को फील हला जे नाइन किछि लोक रहि जाछंती जो माने फॉर्मली स्कूल यूनिवर्सिटी अटेंड करि पारु नाहंती से मानकु पाएका जस्ट ए प्रोविजन सब आसिला परे से सब बेसी फंक्शनल हला बेसी पॉपुलर हेची ता परे both secondary education पाई मध्य NP और NP 92 और 86 86 अब they have given emphasis कौन सब कहले से माने they have given emphasis on quality emphasis on enrollment of girls and ST SC particularly in science commerce and vocational stream. So NPE 1986 and National Policy on Education they have given emphasis on enrollment of girls gender sensitization ta upre emphasis deichanti and for strengthening the role of boards of secondary education jo boards uda ka rahichi ta upre emphasis dele strengthening school infrastructure kemti besi bhalo se infrastructure ku development kara jai paribo ta upre madhe se lekichanti policy re staff development different in service trainings were also conducted jemti amara PMOST कोउथरे आ गोटे क्लास रे प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड हला 92 पाखा पाखी एंड CTE IAC एगुडा को टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस गुडा को मध्य रिनोवेशन हला बस ताको मध्य ऑर्गेनाइज करा गला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जोटा में कहबा बीएड कॉलेज गुडा को बा IAC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन जोटी बीएड एमएड आउ हमर एमफिल एजुकेशन एगुडा को सब करा जाउची से गुडा को खोलिला 1986 परे मेनली एई डॉक्यूमेंट परे ही ताकू रिस्ट्रक्चर कराला टीचर एजुकेशन को सहित मतलब रिओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 3 लैंग्वेज फार्मूला इवैल्यूएशन प्रोसेस इन एग्जामिनेशन रिफॉर्म एगुडा को सब हला तुमरो सेकेंडरी एजुकेशन रे कोन सब चेंजेस आसिला एंड बा कोनटा चेंजेस करिया पई हमरो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कहि छी सेई गुडा कहि कुहा जाउची तार कंटेंट को केमति हमें डेवलप करियो से विषय को हाला लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला को यूटिलाइज करा जिवो इवैल्यूएशन प्रोसेस अगर हमर केमति जस्ट सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होतला बे केमति ऑब्जेक्टिव हे परिबो ताको मध्य देखा होला एग्जामिनेशन सिस्टम रे मते रिफॉर्मेशन हला बा रिफॉर्मेशन करिया पई से माने कहितले ई डॉक्यूमेंट रे आउ कोन कहि कुहाई छी इथरे कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर दे 10+2 जोटा कहि परिया वोकेशनल एजुकेशन जोटा में different type of training vocationalization of
provide valuable manpower and economic growth. एबे भी NEP 2020 भी सही importance देछि vocational education को, skill India बा skill को बेसी importance दिया जिवो। पढ़ियो सबु नवोदय विद्यालय जोटा कि 1986 परे ही बेसी खोलिला बहुत गुडे स्कूल्स गुडाक नवोदय विद्यालय ओपन हेछि सेठी मध्य बहुत गुडे रूरल एरिया रे पिला माने केमति पढ़ी पारे तार मध्य एम्फसिस दिया जाउछि। अच्छा हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम ता ऊपर मध्य नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 बहुत जिनस लिखिछि एवं केमति तार ताको बेसी स्ट्रक्चर करा जाय परिबो वो केमति तार क्वालिटी डेवलपमेंट हबो तार रिलेटेड मध्य सेथि एम्फसिस दिया जाइछि। एथि गोटे डाटा देखिबो से टाइम रे 1986 रे कोन सबु ता परे जस्ट 2006-7 रो number of central universities institutes deemed to be universities तार गोटे डाटा देछि केते थिला 2006-7 रो एटा गोटे डाटा मु मध्य आ गोटे इंक्लूड करछि 2012 रो डाटा एटा केते टा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रहिछि 297 टा रहिछि स्टेट यूनिवर्सिटी 43 टा सेंट्रल यूनिवर्सिटी 65 टा 5 टा रहिछि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आ डीम्ड यूनिवर्सिटी रहिछि 129 यार गोटे डाटा वर्तमान रो हायर एजुकेशन लेवल से तो देइछन 2000 बही रे 6-7 रो एटा गोटे मु कलेक्शन करछि 2012 रो आ गोटे कलेक्शन करछि देखो एबे केते बढ़ी गलानी हायर एजुकेशन रो लेवल टा जोटा रही 2018 आउ 19 रो प्रायतः कॉलेजेस रही 39,931 आउ यूनिवर्सिटीज रही 993 एबे भी देखो ओडिसा रे केते यूनिवर्सिटीज हे गलानी आगरु मात्र थिला केतेटा थिला ओडिसा रे एबे केतेटा यूनिवर्सिटी अछि मैम आगरु 4टा यूनिवर्सिटी थिला डीम्ड यूनिवर्सिटी माने कोन की डीन माने समने हेबे आगो को माने ताकर हेई नै यूनिवर्सिटी बट दे आर इन द प्रोसेस इन दिस एथरे ऑप्शन डीम टू बी यूनिवर्सिटी हला तर एउडा को सब तार डाटा उडा को रहिछि किंतु तमे वर्तमान केतेरा यूनिवर्सिटी रहिलानी ओडिसा रे को टोटल केतेटा यूनिवर्सिटीज रहिछि की कहबो को नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज केवल 4टा थिला त हमर बरमपुर संबलपुर आ रेवेन्सा भी नथिला उत्कल यूनिवर्सिटी ही थिला आ गोटे थिला तमर नॉर्थ ओडिसा यूनिवर्सिटी एबे केते हेलानी माने आ तो ओयूटी भी रहिछि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज गुडा को रहिछि मैम ओनली प्राइवेट ना गवर्नमेंट मे बी 8 गवर्नमेंट ना प्राइवेट बोथ दीटा को मे बी 8 मैम 10टा मैम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 10टा आ प्राइवेट तो 16 अछि आ बहुत गुडे सेंचुरियन अछि प्राय तो 28-30 पाखा पाखी हे गलाडी यूनिवर्सिटीज आ देखियो तमे चेक करियो बही रे तमरा नाही बट ओडिसा रे बहुत हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज उडा कहलाडी जोटा कि यूजीसी अप्रूव मध्य करिछि एम तो फेक यूनिवर्सिटी बहुत गुडे बाहर छि देखियो टाइम टू टाइम यूजीसी सेटा रे नोटिफिकेशन देई थाए फेक यूनिवर्सिटी रे लिस्ट मध्य देई थाए जो माने डिस्टेंस एजुकेशन कर देबा कोहंती बट सेमान कर अप्रूव हे न थाए की कहबो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 21 ता अछि 21 गवर्नमेंट हला 21 ता अछि आउ प्राइवेट ओडिसा रो हां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज केतेटा नेक्स्ट क्लास रे कहबो हला ए तम पई क्वेश्चन वर्तमान आउ किछि हम पढिबा आउ जस्ट लास्ट हे गलानी डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज आगरु थिला ऑटोनोमस कॉलेज उडा को नथिला ए ऑटोनोमस कॉलेज माने कोन बुझुचो एटा कि हमरा पीओए बा प्रोग्राम ऑफ एक्शन आउ तमरा एनपीई नेशनल प्रोग्राम पॉलिसी फॉर एजुकेशन से माने एम्फसिस करछन व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस कॉलेज स्वयं शासित हां सो एक्चुअली आगरु थिला जे से निजे एग्जाम कंडक्ट करता है निजे भी एग्जाम भी खाता भी देखता है so they are autonomous they are having that type of power to implement different administrative activities so it is making decentralized form of administration ha मैम गोटे डाउट अछि मैम जो आपण कहले कि हमरा ऑटोनोमस कॉलेज से माने कोन तांको करिकुलम से माने निजे तैयार करथंती
वर्तमान मध्य सेमतिया करिकुलम को निजे करिया पई मध्य आसची नाक रो विभिन्न प्रकार रो इंस्ट्रक्शन आसुची निज पिलांग पई 2 ईयर कोर्स हो बा 3 ईयर कोर्स हो तमे निजे टीचर्स माने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स नीड एंड देयर डिमांड दे कैन आल्सो स्ट्रक्चर देयर कोर्स ताको मध्य दिया होची कारण आगर देखो तो गोटे रिजिड कोर्स समस्त पढिया बट पिलांकर अनुसार किछि हो नथिला त वर्तमान मध्य ताको फ्लेक्सिबल करा जाईची डिजाइन ऑफ जोटा कि अछि जोटा कि यूजीसी किछि कोर्स ऑफ स्टडीज को आउट के मॉडिफाई करिया पई मध्य चाहूची किंतु जोटा कि एनपीई रे भी कुहा हितला जी दे हैव टू आल्सो डिजाइन कोर्स ऑफ स्टडीज एज पर द नीड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इट पढिबो improvement of efficiency with respect to teaching research workload academic calendar also higher education रे केमती सब यूनिवर्सिटी गुडा को करिवे among performance appraisal of teachers have to assess their own work code of ethics of teachers so teachers मानकर ethics केमती डेवलपमेंट हबो से माने केमती कोनसी प्रकार करप्टेड एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व न होबे ताकू मध्ये देखा जिवो financing higher education so NP 1986 it has also given more emphasis to financing of higher education where grants will be given for the development of universities and different colleges it so deiji padibo टीचर्स मान एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को मध्य गोटे यूनिवर्सिटी रे करिया पई जोटा यूनिवर्सिटी टीचर्स बा हायर एजुकेशन टीचर्स मान को पई एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस ताकू मध्य एस्टैब्लिश करिया पई कोहाई छि जोथि ओरिएंटेशन आ रिफ्रेशर कोर्स उडा को दिया जाई परिबो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च ओके रिसर्च मध्य केमदी करि परिबे बेसी इंपोर्टेंस टू रिसर्च बेसी इंपोर्टेंस दिया जाई छि एनपीई 86 रे देन टेक्निकल एजुकेशन जेमती हमरो जानिछो टेक्निकल एजुकेशन को मध्य इंपोर्टेंस दिया आइछि ता विषय मध्य किछि सजेशन दिया आइछि जेमती कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्टडीज केमती काउंसिल जेमती हमरो अछि एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ताको स्ट्रेंथन करे जिबा पई जो 1986 आउ एनपी 1986 रे को आइछि क्रिएटिंग न्यू बोर्ड्स जेमती रहिछि डिस्टेंस एजुकेशन पई GNU AICT they can combinedly work integration of craftsman training जोटा जेमती हमर किछि vocational training हमें देई परिबा national manpower information system so we can understand how many skilled person educated persons are there in our area technical education for women continuing education so different schemes are there AICT has launched scheme of national academic network for continuous education so एडा सब टिके मने रखिबो जे किछि बुझिबार बेसी नाही बस मने रखिया बेसी दरकार ऑर्गेनाइजेशन नाउ कोन सब एक्टिविटी कराई छि inter regional mobility of students that means some student from Kashmir or Meghalaya they can come to Odisha they can also take admission here ये सब ऊपर इंपोर्टेंस दिया गला मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करिकुलम डेवलपमेंट सेल एगुडा को सब डेवलपमेंट करिया पई मध्य कोहाला ओपन एजुकेशन सिस्टम सो एनपीई 1986 and 1982 they have given emphasis on open education system that and after that only this IGNOU has come to our country जोटा कि इग्नू सिटी तयारी करा गला इग्नू रो गोटे खुला हला ओपन स्कूल ओपन कॉलेज जो माने रहु माने पढी पारु नांती फॉर्मल सिस्टम रे सो ओपन एजुकेशन सिस्टम को मध्य 1986 रे एम्फसिस दिया आइछि आउ कोन जो 129 programs were on the different areas at IGNOU रो बहुत उडे कोर्स सेते थिला 129 एबे केते अछि बहुत उडे अछि 200 300 पाखा पाखी कोर्स गुडा का डिप्लोमा डिग्री तमरो सेसो होया सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एगुडा को सब ओपन हेलानी एंड वन एजेंसी इज देयर दैट डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल गोटे काउंसिल रहिछि दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी और मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज ओपन जेमति हमरो संबलपुर रे गोटे सेगुडा को मध्ये ओपन करिया पई सजेशन दिया जाइथिला से टाइम रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जोटा NIOS
different type of technical organizations एगुड़ाक रही तो यही चैप्टर पढ़िबो तो माने सब मैम एवडा तो एबे बंद हे जे जो संबलपुर यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी ना एटा बंद हिची ना किछ नै एटा कहूची कि जे माने को सजेशंस बा को प्रकार रो माने सजेशन गुडा को लेखा है जे 1986 से माने कोन सजेशन जोटा एई चैप्टर टा पूरा जो यूनिट 6 टा रही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो से माने कोन देइथिले ला सेटा से माने सेई डॉक्यूमेंट रे लिखि छथि जे एई सजेशन दिया जाय छै एवं ता रिलेटेड कोन सब करिया को पडिबो बा करा है छै ता रिलेटेड गोटे यूनिट वर्तमान तो बहुत आउटडेटेड हेलाडी माने एबे तो बहुत गुटे जिंस बंद हे जाय छै बा किछरा जिंस एबे चालुनी एई भितर बट यू शुड नो so this is all about unit 6 बहुत गुटे जिनस रिपीट है फास्ट यूनिट आउ एथरे पढ़िबो त माने जानिबो मेनली सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंटरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन एडा को केमती एनहांसमेंट करा जिवो सेही विषय रे ही एई पर्टिकुलर यूनिट 6 रे लेखा है जी जेटा कि तमे बुझी पालो ना एटा ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ए यूनिट टा पर्टिकुलरली so they have given some suggestions they have given some ideas regarding how to improve सही डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे जे एनपी कोन एवं तार कोन सजेशन थिला एलिमेंटरी एजुकेशन पाई ओपन एजुकेशन पाई आ तार रिलेटेड कोन सब रिएक्शन बा कोन सब डेवलपमेंट हेछि हम कंट्री रे से विषय सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास एनी डाउट तमे पचरी पारिबो एबे मैम एनपी 1986 जदि आसला पुनी एनपी 1992 कोन पय आसला किछि मॉडिफिकेशन ता परे किछि रिएक्शन आसला आमे आउ किछि चेंज करबा से विषय जोडा समय लिखि नथिले 1986 किछिटा माने प्रोग्राम थिला जोडा कार्यकारी हेई पारि नथिला सेते पय मान ताको टिके संशोधन करा जाय कि नहीं सेटा उटा थियोरेटिकल थिला जे एमती करा हबो सेमती करा हबो किंतु तार प्रोग्राम ऑफ एक्शन ता को जो 92 हैला प्रोग्राम ऑफ एक्शन कोन नबा जेमती सेटा कहला प्रोग्राम ऑफ एक्शन जे नवोदय विद्यालय गुडा को खुला जाऊ कंप्यूटर एजुकेशन पई किछि टर्म हो पीमोस जोटा असला तम ट्रेनिंग को दिया जाऊ इन सर्विस तो सेटा कोन ट्रेनिंग तो देबा जे से स्कीम टा कोन हबो नवोदय विद्यालय जोटा खोलिला ता परे परे जस्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन परे तो से गुडा को एक्शन कोन नबा हला सेटा हला एक्शन ओरिएंटेड एटा थियोरेटिकल जस्ट दे हैव गिवन दैट आईडिया आ एटा हला एक्शन रिलेटेड 92 तार फील हला जे ना किछला जिंस रहउची जोटा कि आमे वर्तमान आउ किछि इंक्लूड करबा आ गुटे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहि किना किछि लेखा लेखि करबा सेटा मध्ये हला अच्छा आउ के कोन कहबो अब तो टाइम सरी गलानी हेलो मैम को मैम आपण जो एनरोलमेंट नंबर टा कहले कोन पई तुमर जो ए जो अटेंडेंस पई को माने सब अटेंड करूछो न करूछो हमें जानिबु ना से मुडी लेट रे असली तो जॉइन हेली जॉइन होनतला से लिखि दे एनरोलमेंट नंबर तमडा जो कमेंट बॉक्स रे लिखि दियो लिखि दी हां ताले किछ नै एटा रिकॉर्डिंग होछि ना तम रिकॉर्डिंग रे समस्त कर एनरोलमेंट नंबर भी आसीबो को माने अटेंड करूछो सेमान कर रोल नंबर जदी हमें आरसी रे जानिया को चाहेबे तारे से माने मध्य लिखि देई पारियो देखि जानि पारियो जे को पिला माने अटेंड करले आइया थैंक यू हला Ma'am, what is the difference between college, autonomous college and universities? यूनिवर्सिटी रा टिके बड़ तमर सब प्रकार डिपार्टमेंट है कि हायर लेवल एमए लेवल रे पाठ पढ़ा होची रिसर्च करा जाउची आ कॉलेज उडा करे एते फैसिलिटीज नाही हाई लेवल रिसर्च होची सेही कंटेंट ऊपर जेमती उत्कल यूनिवर्सिटी बीजेबी कॉलेज तुम जानि परतटे टिके छोटो जगह रे अछि कम इन डिपार्टमेंट सेही बहुत बड़ डिपार्टमेंट सेठी एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन सब बेसी पिला एनरोलमेंट हेई परिबे बेसिक नंबर टीचर्स से डिपार्टमेंट रही Ma'am, what is the difference between inter and intra?